you, my dear students. Hope that you all will be fine. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच. आप इसी तरह से जो हमारी वीडियोस है इन लेक्चर्स को इसी तरह से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो जाए. और जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. आज हम और एक एमएड जो सेकंड सेम है फ़िलासफ़ी में और एक क्वेश्चन है उनका, वो हम डिस्कस करेंगे. और जिस बच्चे के पास मटेरियल नहीं है वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है 7006254387. तो फिर मैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको फिर मटेरियल भी दे सकता हूँ. मेरे पास मटेरियल है इसका. तो उस पर हमने कल जो ग्लोबलाइजेशन पे हमने रखा, या आपके 3 टॉपिक्स है जो मेजर ट्रेंड्स है इस वक्त, वो उसमें आपका ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन या एजुकेशन भी लिख सकते हो. तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हमसे शेयर करेंगे. आप फिर अपनी कॉपी पे लिख सकते हो ताकि थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट आ सकता है. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन प्रमोट शेयरिंग ऑफ बेस्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम्स एंड हेल्प इन डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजन्स थ्रू मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स. तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या होता है. इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब आप इंटरकनेक्टेड हो बाकी मुल्कों से, कंट्री से, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं. उस वक्त है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन प्रमोट शेयरिंग ऑफ द बेस्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम्स एंड हेल्प इन डेवलपिंग global citizens through the mobility of students and scholars. Mobility of scholars to pursue their scholarly activities and access the vast resources of the university system across the globe is as old practice. In Indian context too, this aspect of internationalization of higher education is, इसमें हम बोल सकते हैं, as old as education itself. Student mobility and global exchange took place in ancient time, starting from Takshkala, with attracted thousands of students from all over the world studying in numerous subject areas at this university. Later on, University of Nalinda also attracted many scholars from various parts of the globe. अब देख सकते हो इसमें ये मतलब जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ से हमारे मुल्क से इंडिया से जाते हैं बाहर, तो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए, या बाकी रिसर्च करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं कि यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो. अपनी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, रिसर्च है, पेडागॉजी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. यही मेन मकसद है इंटरनेशनलाइजेशन का. इंटरनेशनल ऑफ हायर एजुकेशन प्रमोटर्स, इसमें जो मैंने अभी आपको बोला, इंडियन कंटेक्स्ट टू द एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑफ हायर एजुकेशन इज ओल्ड एज एक्सेल. स्टूडेंट्स मोबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सचेंज टुक प्लेस इन एंशिएंट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द तक्षशिला व्हिच अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीइंग इन न्यूमरस सब्जेक्ट्स एरियाज एट दिस यूनिवर्सिटी. लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे अट्रैक्ट है, ग्लोबल के मुल्कों से भी वहाँ पर आते थे. इन मॉडर्न टाइम्स ग्लोबलाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स. इट इज altered every conceivable aspect of our lives including higher education. Also the rate of the globalization in 1980s has brought back the focus of internationalization of the higher education side. In broader sense, it has been a catch phrase since amongst the international higher education community. Internationalization of higher education is the response to globalization in order to raise the quality of education, to catch up the global students with the alignment of curriculum, to insert the type of the skill to the productive in globalized and competitive economy. This also is essential for graduating students to navigate through the increasingly interconnected world. तो इसमें ये सारा आप लिख सकते हो कि किस तरह से हम जो मेन है इसमें, हाँ इसमें बहुत मैं उसको दिखे चलो उसको भी बुरा उसमें मैं तो बहुत गई हूँ बस में से सीख ना वो नहीं से गई हम इसको मैं तो वो बकर मुगलाओ ये तो पच्चे में चाय बात कर सकता क्या Students' mobility is the most visible aspect of the internationalization of higher education. There is exponential growth in the number of students enrolled in the higher education outside their country, and this trend likely to continue. India is a home to one of the largest global pools of the foreign college aspirants. तो इसमें है जैसे बहुत सारे हैं, जैसे as on December 2020, India had more than 10 lakh students studying abroad. तो उसमें however in the comparison number of the foreign students coming to India for the purpose of the higher education as per
ऑल इंडियन सर्वे ऑन एजुकेशन 2019-20। तो इसमें है आप देख सकते हो 49,348 स्टूडेंट्स। तो कितना ये बोला था यही है। इसमें हम जैसे हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल सकते हैं, फर्दर द इंडियन मोटिवेशन टू कमिटेड टू इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनलाइजेशन लाइज इन द बेनिफिट दैट follows effective and systematic internationalization of higher education, quality upgradation, economical expansion, global outreach, knowledge acquisition, development of the internationally relevant curriculum framework with the specific initiatives with student, under student, faculty programs, institutional mobility. These institutions will improve the keeping leveling of global resources for achieving the global capacity building of faculty, institutions, increase students across access to the quality education, ensure the diversity of the classroom and campus, sharing of the teaching learning research best practices, and gradually evolving into the universities with global standards in teaching learning researches, community engagement and pastoral services. Global ranking will follow. So ये important है, ये वाला स्लाइड जो है, क्या जो इंटरनेशनलाइजेशन है इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे हमारा जो क्वालिटी अपग्रेड होता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, ग्लोबल आउटरीच होता है, नॉलेज एक्विजिशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनली रेलिवेंट होता है। तो ये वाला स्लाइड में फिर एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको लिखना है। फर्दर इन इंडिया द मोटिवेशन टू कमिटमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनलाइजेशन lies in the beneath that they follow the effective and systematic international of higher education, quality upgradation, economical expansion, global outreach, knowledge acquisition, development of internationally relevant curricular framework with the specific initiatives under the students, faculty program, institutional mobility। तो इसमें इसे ये चीज़ें होती है, मतलब बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का फैकल्टी हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा, एंश्योरिंग द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैंपस हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, ग्रेजुअली इवॉल्विंग इनटू द यूनिवर्सिटी विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो टीचिंग लर्निंग का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, यही इसका मेन। जैसे NEP 2020 आपने देखा है, इंटरनेशनलाइजेशन का है, इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स द रिवैम्पिंग एंड रीइनविगोरेट्स द हायर एजुकेशन reinvigorates the higher education system through the new national policy 2020 for taking its rightful place amongst the best higher education systems in the world. The national education policy 2020 built the fundamental pillars of the SS quality and इसमें है equity, quality, affordability and accountability. Recommends the path-breaking reforms that aim at a paradigm shift from the equipping of students, teachers and education institutions with the right competencies and capacities and capabilities, and creating an enabling and reinvigorated education ecosystem for the vibrant new India. The new NEP 2020 extensively focuses on attaining the highest global standards in the quality of higher education. Further, it reinforces the need to attract a greater number of the international students and achieve the goal of internationalization at home. This policy approaches the critical need to promote India a global steady destination, providing a premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role at Vishwa Guru. तो ये इसमें है कि मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसमें मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है इसमें है दिस पॉलिसी aims to make our younger generations of learners aware and understandable global issues and make them truly global citizens committed to the human rights, sustainable development, global well-being. This approach, promoting the internationalization of higher education 2020, involves the faculty facilitating student and faculty mobility, establishing international partnerships for the research. इसमें है easing the process through with the institution can enroll students from around the world, and well as the feasibility of carrying credits across the institutions in multiple countries and other such measures above all the NEP calls for promoting India as a global study destination. तो ये important है उसमें, तो ये है इसमें। अब हम बात अगर करेंगे इसमें जो है द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका इंटरनेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें जो ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स वो है टू मेक इंडियन एज अट्रैक्टिव। आप देख सकते हो सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ दिस गाइडलाइंस विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हेल्प इन अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द मेकिंग इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम globally committed in offering quality of higher education. The objective of this guidelines are to make the Indian as an attractive study destination for the foreign students. तो यही है to foster international competencies in our faculty and students, to develop a global mindset of our learners and shape them as global citizens with a deep-rooted people in the being Indian. To promote the attractive linkage between India and foreign higher education institutions, to promote global ranking and internationalization indicators. तो ये कुछ जो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स है, ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है टू मेक इंडियन अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटेंसी इन आवर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, टू ग्लोबल माइंडसेट ऑफ द लर्नर्स है, शेप द ग्लोबल सिटीजन्स विद रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियंस है। इसमें है रिसर्च हायर एजुकेशन करना, इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना, वहाँ से जब आएंगे तो रैंकिंग बढ़ेगा, ग्लोबल रैंकिंग, इंटरनेशनलाइजेशन इंडिकेटर्स को बढ़ाना, स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स उसमें हैं, आप देख सकते हो। इसमें इंटरनेशनलाइजेशन एट होम,
तो उसमें हम ये वाला स्लाइड आप देख सकते हो, इसमें ये भी आप लिख सकते हो ये वाला इंटरनेशनलाइजेशन, इसमें ये वाला international home, the most important of all strategies related to the internationalization at home, which means integrating the dimensions of international learning environment with the higher education institutions. Higher education institutions encourage to put necessary efforts towards the internationalization at home, discussing their guidelines with the compromising the curriculum of Indian context, the capacity building international institutions, collaborate to communication between Indian and international faculty, international dimensional curricula in the science, social science and beyond, to get deeper reflection about the course content and the effective pedagogy to promote the better learning outcomes of all the students. Other areas of strength in the India such as science, technology, engineering, mathematics है, computer science है, gaming, ये बाकी चीज़ें हैं. Quality residential facility students from the abroad to ensure effective learning, living conditions and learning environment to international students है. On campus support to the students from the abroad to field, provide continuous and inclusive support to the international students. तो ये है important. आप देखिए कितने objectives है इसमें, ये आप सारे लिख सकते हैं एग्जाम में. उसमें है ऑन से ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट डिजाइन टू फैसिलिटेट स्टूडेंट सोशल एंड एकेडमिक असिस्टेंट फोकसिंग particularly on the transitions process, integrating incoming international students with the local community, friendly environment for incoming students to have a safe, positive and holistic experience, offering local language or courses and other bridge courses as needed है. तो ये है शॉर्ट टर्म नॉन डिग्री, इसमें ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं. कोर्सेज एंड प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन है, लैंग्वेजेस है, हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इनटू द इंस्टीट्यूशन ब्रॉडर, इसमें ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. तो ये है जैसे NEP 2020 ने ये चीज़ें बोला है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ से आप खुद, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप खुद यहाँ से अपने घर में जब आप मोबाइल से देख सकते कौन कौन से इसमें है, जैसे ये वाले पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन करके अपने कॉपी पे लिख सकते हो और फिर एग्जाम में इसको आप ट्राई कर सकते हो. तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स है, आप देख सकते हो इसमें मैंने बोले हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल स्किल, क्रॉस कल्चर अवेयरनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, ये चीज़ें पैदा होती है इससे, आप देख सकते हो. ICT बेस्ड इंटरनेशनलाइजेशन, अब ICT का इस्तेमाल करके हमने एक रेवोल्यूशन लाया है इस इंटरनेशनलाइजेशन में. इंटरनेशनलाइजेशन है, अब देखो यहाँ से आप मोक उसका है जो है एड्रेसिंग ये है, इसमें आप लिख सकते हो मोक उसका इस्तेमाल हो रहा है, ICT का इस्तेमाल होता है. तो इसने भी यहाँ ज़बरदस्त इसमें एक इनकलाब लाया है. देखो ये ICT का इसमें आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है. बहुत बड़ा लेक्चर है. एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन क्या हमने किया है, जिसकी वजह से ये सारा मुमकिन है. ये वाला स्लाइड आप लिख सकते हो. ये इसमें है ब्रांड बिल्डिंग अब्रॉड से, ये देखो हमने ये वाला सिलसिला अब शुरू किया है. ये स्लाइड है. ये वाले पॉइंट्स तो आपको ज़रूरी लिखने हैं. ये वाले पॉइंट 5 लिखने हैं आप देखो एग्ज़ाम में, तो ये उसमें आ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.